Hello, all of you. Welcome to our sixth day of IELTS speaking, and today we are going to discuss some more questions on IELTS speaking part 1. Yesterday we had practiced the questions 10. The last question was, uh, one second. What is your favorite means of transportation? Am I right? Yes. Yes, sir. Good. Now the next question is, how do you like to travel for a long distance trip? Now, anyone who would like to answer, just raise your hand and start answering. The question is, how do you like to travel for a long distance trip? Long distance. How do you like to travel for a long distance trip? This is the question. How can we answer it? Yes, sir. I would like to travel in long distance trips with own car, as because of the own car is more convenient and comfortable, and we can stop wherever it is required, or which I like to stop, and I like to buy something and something else. I can stop it there and get the things. So it is convenient. One, it is comfortable, and on time we can reach the place which we are planning to. All the time we can reach. Okay. On time, sir. On time we can reach the place Okay. which we have already planned. Which we have planned or which we have already planned. Okay. So one thing I'm telling you here, Mr. Smith, you should not use as and because together. As और because हम एक साथ कभी यूज ही नहीं करते, ठीक है? Right, sir. And don't start with yes. The question is, how do you like to travel for a long distance trip? आप एक लंबे ट्रिप के लिए किस मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन को प्रेफर करें, ठीक है, या किस तरीके से आप यात्रा करेंगे लंबे दूरी की, ठीक है? तो अब आंसर क्या हो सकता है? कुछ लोग कहेंगे कि लंबे दूरी को मैं कार से ट्रैवल करना चाहूंगा, कुछ कहेंगे कि मुझे फ्लाइट काफी ज्यादा पसंद है। अब अगर मैंने कहा कि मुझे लंबी दूरी के लिए मैं फ्लाइट को प्रेफर करता हूँ, तो कारण बताना, लेकिन एज और बिकॉज कभी भी हम एक साथ यूज करने नहीं जा रहे। Am I clear now? Yes, sir. Okay. Mr. Shivanshu, answer the same. As far as my opinion is concerned, I would love to travel by uh, by airplane because it save time. It save our time too much, and we can enjoy 1 or 2 more days while we spend time while we spend time in car or anything else. Okay, you started properly. Like, as far as my opinion is concerned, that's too good, because it is an opinion-based question. You have to just present your own opinion. Okay. Now, you Yes. just said it save our time. Instead of saying it save our time, we should say it saves our time. Okay. Or it It saves our saves, valuable time. yes. Save, that should be added. S lag jayega na, it saves our valuable time, which we can spend on our favorite activities. Am I clear? Yes, yes, sir. That's it. And it is the fastest means of transportation that we can say here. Now, lower your hand. Sir, Mr. can I Sushmit, try? 1 minute. Okay. अभी मिस्टर सुष्मित आपने जवाब दिया था on time we can reach the place which we have already planned. So instead of starting the sentence with on time, we can say we can reach the place in time. Okay. In time. And Yes, sir. plan our schedule according. बात Okay. समझ में आ गई? हम Yes, समय sir. रहते या समय पर अपने जगह पहुंचने पर हैं। अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएंगे और हम अपने शेड्यूल को अकॉर्डिंगली उसके अनुसार प्लान करें। Sir, तो क्या on time, 1 सेकेंड, सेंटेंस होगा वी कैन रीच द प्लेस इन टाइम एंड प्लान आवर शेड्यूल अकॉर्डिंग। दैट्स इट। Okay. याद रहेगा ना? Right, sir. सेंटेंस Yes, क्या yes. बोला मैंने? वी कैन We can reach the place in time. destination in time
and plan and planned or or scheduled schedule accordingly. accordingly. That's it. Am I clear? Yes, sir. Very good. Now, कुछ बोल रहे थे मिस्टर शिवांशु? You were saying something? Yes, sir. I'm saying is on time is incorrect. In time would be better. Okay. Okay. Both are correct. It depends on the sentence actually. Now, Okay, sir. Mr. Saurabh, answer the question now. Yes, sir. Would like to say for this answer, as far as my opinion is concerned, I prefer long distance travel by using aeroplane because it's a fastest mode of traveling and time saving. It this saving time we use for extra activities. Very good. I can use the saved time for another activity. Am I clear? Instead of Yes. saying extra activities, we can say another activity. Okay, sir. Clear now? Yes. Happy? Yes, sir. Watch. अच्छा लगा? I'm quite happy to listen your sentences and you are getting confident day by day. So good. Now, next one, Ms. Sakina, answer the question. Yes, sir. As far as my own opinion is concerned, I usually travel by airways, like aeroplane, because it is a fastest means of transport, and also it is very most comfortable means of transport to travel. And besides of this, we can also reach in time uh, our destination and enjoy all the activities there. Very good. And besides of this, there is no need to say and besides of this. Okay. Yes, sir. So we can say besides this, it is really convenient and time saving. That's it. Okay, sir. And I can utilize the saved time in another activities. I have already told the same, I think, right? Now, Yes. one more thing I observed, Mr. Shivanshu, you had used airplane. Do you remember? आपने Yes. एयरप्लेन वर्ड यूज किया. हाँ, अभी आप यूएस में नहीं है. यूएस में एरोप्लेन को क्या बोला जाता है? I don't know. You don't know? It is called airplane. In US, Yes. we call aeroplane as airplane. Airplane. In British English, it is aeroplane. Clear? Yes, sir. Very Okay. good. Instead of using airways, aeroplane, not instead of, besides these words, you can also use flight. I That will- use airplane because I'm trying to say airways. Then suddenly I converted my word in airplane. Because you were confused and your brain couldn't recognize the word. Am I right? Yes. तो It was तो a slip of अगर tongue. सर Yes. अगर जैसे इन्होंने गलती से एयरप्लेन बोल दिया और अगर हमने भी ऐसे बोल दिया कभी, तो वो कुछ नेगेटिव मार्किंग हो सकती है क्या? नहीं, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी because that person would be already aware of the same term, right? जी सर. They are experts, so they are not going to direct your band. They are aware of this word very well. Okay. Now, the question was, how do you like to travel for a long distance? So obviously, I'll have to give my opinion. How can I? I will say, personally speaking. Okay, or as far as I am concerned, as far as my own opinion is concerned. Okay, so Okay. we can start like personally speaking. मैं अपने बारे में बात करूँ. I would choose aeroplane as my priority for a long distance trip. Okay, now the reason, because it doesn't take me so long to get to my destination. Obviously, the airplane is the fastest way of transport, and I don't want to waste my valuable time on the trip. Am I clear? Okay, sir. Yes, sir. कैसे जवाब दिया मैंने? पर्सनली स्पीकिंग पहले भी आपको पता है, जब अपना ओपिनियन देना हो तो पर्सनली स्पीकिंग बोल सकते हैं. ठीक है, तो पर्सनली स्पीकिंग क्वेश्चन का, हाँ, पर्सनली स्पीकिंग आई वुड चूज एरोप्लेन एज माई priority for a long distance trip because it doesn't take me so long to get to my destination. Obviously, the aeroplane is the fastest means of transportation and I don't want to waste my valuable time on the trip only.
Am I clear? Yes, sir. Yes. हाँ, तो इस तरीके से हम जवाब. Now coming to the next question here, do you prefer to be a driver or a passenger? Do you prefer to be a driver or a passenger? Here again you will have to give your opinion. Opinion means don't start like personally speaking as far as I am concerned. We can, but we can also use other. As my opinion. Do you prefer to be? We can't start like in my opinion here because we have been given two options here, driver or passenger. We have to select any one. Both we can use, sir. Yes, we can. If we have different ideas in our head, then we can go ahead with both the things. So we can use as far as my opinion. Mhm. Don't So start. as Like, okay, go ahead. I'll be making the correct. yes, as far as my opinion, when I'm planning to As far as my opinion is concerned. as far as my opinion is concerned, when I plan to go outside the city, I Hmm. always prefer to get a driver, to take a driver. And if it is in a city, then I always prefer to take the car uh, in my own drive capabilities. Okay. Anyone else? Yes, sir. Hmm. As far as my concern, क्या हो रहा है ये? कल पढ़ाया फिर भी गलती. as far as my opinion is concerned, Hmm. certainly I would like to be passenger while I am traveling, because I don't know the drive, and sometimes it also irritate me because driver makes me late to arrive. I don't know the drive. The sentence is incorrect. We can say, I don't know how to drive. How Okay. to drive? Yes. I don't know how to drive. I have already taught you this structure, I think. Okay, sir, I will try. Yeah, sure. So, do you prefer be a driver or passenger? Hmm. This question. Generally, I prefer always driver. Driver, because I like to driving a car, and is more convenient for me for a long distance travels. And mm, okay, sir, that much. Hmm. Okay. You just started like you prefer always a drive. Yes. So instead of saying I prefer always a driver, we can say I prefer to be a driver. Okay. Okay. And I had already told you, whenever we are having these kind of questions, we should not repeat the exact words of the speaker. Do you remember? Yes, sir. स्पीकर के हूबहू शब्दों को हम रिपीट करने नहीं जा नहीं रहे. जाएंगे, एग्जैक्टली हम पैराफ्रेज पैराफ्रेज करेंगे. करना है. गुड. नेक्स्ट. Miss Sakina, answer the question. Yes, sir. I believe that I want to be a passenger because I don't know how to drive. So I like to be a passenger on traveling instead of be a driver. On traveling, while WHILE, Yes. while traveling means travel करने के दौरान मैं पैसेंजर होना ज्यादा पसंद करती हूँ. While traveling should be the sentence here. Am I Okay, clear so now? again I will give answer then. Okay. I strongly believe that I want to be a passenger while traveling because I don't know how to drive. That's why I
I enjoy be a passenger instead of be a driver. Being a driver. Being a driver. Yes, being a driver. Good. Very good. लास्ट में आंसर देने में थोड़ा सा फायदा हो जाता है ना, सबके आइडियाज हमें सुनने को मिल जाते हैं, फिर हम प्लान कर पाते हैं। Yes, sir. अब इसका मतलब It's ये a नहीं कि सब ना strategy. लास्ट से ही वो स्टार्ट करें, बिल्कुल। आगे आए, आगे बढ़े, क्योंकि जितनी ज्यादा गलतियां आप करेंगे उतना ही ज्यादा सीखने के ऑप्शंस आपके पास होंगे। ओके, तो जितनी गलतियां करनी है सारे इस क्लास में कर लीजिए कि सारे करेक्शंस हो जाएं, और फिर आप एग्जाम में ऐसी छोटी मोटी गलतियां बिल्कुल नहीं करें। ठीक है, अभी इस क्वेश्चन को मैं आंसर, क्वेश्चन है डू यू प्रेफर टू बी ए ड्राइवर और अ पैसेंजर? आप एक ड्राइवर या एक पैसेंजर क्या होना पसंद करते? ठीक है, अब अगर मैं जवाब दूंगा तो मैं क्या बोलूंगा यहाँ? मैं डायरेक्टली बोलूंगा कि ये डिपेंड करता है, ये निर्भर करता है। अगर मैं अपने सिटी में, मिस्टर सुष्मित का जैसा आंसर था तो उनके अनुसार, अगर मैं अपने सिटी के अंदर में ही मुझे अगर चलना है या ट्रैवल करना है तो मैं खुद ही कार ड्राइव करूंगा। लेकिन अगर मुझे आउट ऑफ सिटी जाना है, 100 किलोमीटर से दूर जाना है, 200 किलोमीटर जाना है, या थोड़ी लंबी दूरी तय करनी है, तो मैं पैसेंजर बनना प्रेफर करूँ। क्यों? क्योंकि मैं ज्यादा दूरी तय करने पर थक जाता हूँ और मैं नहीं चाहता कि मैं इतना ज्यादा टाइम सिर्फ ड्राइविंग पर क्या कर लूं, बर्बाद कर लूं, वेस्ट कर। मैं उस समय को कुछ अपने फेवरेट एक्टिविटीज में यूज कर सकता हूँ, जैसे मैं कुछ किताबों को पढ़ सकता हूँ, मैं कुछ ऑनलाइन आर्टिकल्स पढ़ सकता हूँ, मूवीज देख सकता हूँ, म्यूजिक को एंजॉय कर सकता हूँ, और बार बार मुझे रोड को देखने की जरूरत नहीं पड़ती। एम आई क्लियर नाउ? Yes, sir. Yes. हाँ, तो ये हमारा आइडिया होगा और हम इस तरीके से जवाब दे सकते हैं। एम आई अगर क्लियर? सर आपको ड्राइविंग पसंद है तो आप कैसे आंसर दे सकते हैं इसका? अगर मुझे ड्राइविंग पसंद है तो मैं कैसे जवाब दूंगा? मैं डायरेक्टली कहूंगा कि साधारण तौर पर मैं एक ऐसा इंसान हूँ जिसे ड्राइविंग बहुत पसंद है, और मैं नए नए जगहों को खुद ही एक्सप्लोर करना चाहता हूँ, स्पेशली जब मैं ब्यूटीफुल या मस्मराइजिंग लैंडस्केप वाली जगहों को जब विजिट करता हूँ तो मैं कार को खुद ही ड्राइव करना चाहता हूँ। और वैसे भी मैं अपनी गाड़ी को दूसरे को देना नहीं चाहता, क्योंकि दूसरे की ड्राइविंग स्किल्स अलग होती है, ड्राइविंग स्टाइल अलग होती है, और ये मेरे कार को कोई गलत तरीके से ड्राइव करे वो मुझे पसंद। ठीक है, Yes. ओके It will affect my car. हाँ, तो ऐसा जवाब दिया जा सकता है। नाउ आई आंसर, we can start. Like generally speaking, I prefer to be a passenger. Okay, I would love to be a passenger, mainly because it makes me less stressful and nervous. I don't need to pay attention to the traffic and roads, and I can spend my valuable time on doing something really interesting, like reading books, stories, or listening to some kind of music on my phone. Am I clear? Yes, sir. अगर किसी ने कहा कि नहीं मुझे ड्राइविंग पसंद है तो कैसे स्टार्ट करेंगे? जनरली स्पीकिंग, आई लव टू बी अ ड्राइवर सिंस माय चाइल्डहुड। आई एम रियली फॉन्ड ऑफ ड्राइविंग कार्स, okay, and I don't let others touch the steering of my car because that's my personal car and I don't want others to ruin it. Okay, Yes. Yes, sir. that's it. तो That लास्ट could में be कौन सा वर्ड यूज किया आपने? ruin. Ruin, Ruin. बर्बाद. बर्बाद. Ruin. ठीक है, अगर Okay. किसी ने कहा, जैसे मिस्टर सुष्मित ने कहा कि मुझे दोनों, मैं दोनों कर सकता हूँ, कैसे जवाब देंगे? हम लोग बोलेंगे एक्चुअली इट टोटली डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन। इफ आई एम कवरिंग short distances, certainly I would prefer to be a driver. But if I'll have to cover a distance of more than 200 kilometers, certainly I will take a driver and I would be a passenger, because I don't want to waste my valuable time on driving and getting confused because of the different routes. Okay, Yes, sir. I can utilize the saved time in doing some of my favorite activities like reading stories and listening to. That's it. बात समझ में आई या नहीं आई? Yes. Yes, sir. That's it. Now, what do you usually do on your holiday? What do you usually do on your holiday?
ये डायरेक्ट स्टार्ट कर सकते हैं ना सर? Yeah. I usually do in my holiday. I usually prefer to do in the holiday, like mountaining or or traveling to a interior place where we can get the fresh air and the natural scenarios. I usually do in my holidays. क्यों स्टार्ट करेंगे हम ऐसे? वी हैव टू पैराफ्रेज. अगर किसी ने आपसे पूछा कि आप हॉलीडेज के दौरान क्या करना पसंद करती हैं, ज्यादातर आप क्या करते हैं, साधारणतः आप क्या करते I हैं, आपका prefer to जवाब क्या होगा? I prefer to travel. हाँ, आई प्रेफर टू ट्रैवल. Yeah. I ओके, आई prefer to प्रेफर टू एक्सप्लोर न्यू प्लेसेस सो दैट, जिससे कि मैं अपने ज्ञान को बढ़ा सकता हूँ, नए जगहों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकता हूँ. और right. ज्यादातर मैं ये फैमिली मेंबर्स के साथ करता हूँ, जिससे कि मुझे एक प्रॉपर टाइम मिले अपने परिवार के साथ क्वालिटी टाइम Right. स्पेंड करने. That ठीक kind है, of- Yes. इस टाइप का आंसर होगा. कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन तरीका ये हो. हिंदी में शायद ठीक, मैंने शब्दों को रिपीट कर दिया. आई एम एक्सट्रीमली पैराफ्रेज सॉरी. करना है पहले. नाउ एनीवन एल्स वुड लाइक टू ट्राई? Yes, sir. Certainly, I sleep half of the day वन on सेकेंड, my. वन सेकेंड. मैं सर्टेनली आई स्लीप, निश्चित सर तौर पर. निश्चित तौर पर मैं सोता हूँ पूरे दिन तक. छुट्टी पे वही करते हैं सब. ओके, इंस्टेड ऑफ सर्टेनली जनरली कह सकते. ओके, मुझे सर्टेनली यूज करना कहीं होता ही नहीं है. होगा, जगह आएगा वैसे बताऊं. Generally, I sleep half of the day. Then after, I will clean my shoes and completed my all pending work. आई विल क्लीन माई शूज, मतलब मैं अपने जूतों को साफ करूंगा. मैं अपने जूतों को साफ करता हूँ या करूंगा? करता हूँ. करता हूँ. आई क्लीन माई शूज एंड Yes, क्लोथ. ओके, so after spending half of my day, I generally prefer, generally तो पहले ही बोल दिया, I do what? I spend some quality time with my family members. family members. That's Yes. it. Or I spend time with my friends. That's it. Clear? Okay, sir. So that I That can mean- celebrate the rest of the day. Am I clear now? Yes, Okay, sir. so I'm trying now. Yeah, sure. Generally in holiday, I like to play cricket, and if I getting a long weekend, I like to go traveling Hmm. and trekking as well, because I like trekking, Hmm. and it's too much adventurous for me. That's it. Very good. If I get some time, or if I get some days, like Long weekend is not good. if I get a long holiday, then I generally plan to explore new place. Got it Okay. now? Okay, sir. That's it. Next one. Yes, sir. Frankly speaking, it totally depends on my holidays. If I get a 1 day holiday, so I usually spend time with my friends and family in the house. Or if I get the long holidays, so I would prefer to go out of station, out of the town, and spend more time on different kinds of activities with my family and friends. And it allows me to unwind my stress and busyness of life. Okay, very good. It helps me unwind my, what was the term? Unwind my, Unwind from the stress and busyness of my day-to-day life. okay, good. Sir, unwind or unbind? Unbind होता है, W होता है, bind नहीं होता, BIND bind, बांधना नहीं होता. BIND bind. Unwind. ठीक है. Wind. हाँ, WIND. unwind. अब मैं बताता हूँ यहाँ.
कैसे आंसर हम लोग करते? मिस्टर सौरभ, आप परिवार से दूर रहते हैं, राइट? आप फैमिली से दूर रहते हैं ना? यस सर। यस। तो आपके लिए क्या जवाब हो सकता है, या आपके सिचुएशन को सोच के अगर मैं बोलूं कि मैं अपने पेरेंट्स से दूर रहता हूं, ज्यादातर लोग पेरेंट्स से दूर रहते हैं, तो दूर रहते हैं कहने का मतलब पढ़ाई के कारण, जॉब के कारण, तो वो कैसे जवाब? हम्म तो इन दौरान क्या होता है कि जब भी हमें छुट्टियां मिलती है तो हम नॉर्मली क्या करते हैं, अपने घर चले जाते हैं वापस, जिससे कि हम अपने परिवार वालों के साथ गेट टुगेदर कर सकें, बेस्ट फ्रेंड से मिल सकें और हॉलीडेज को सेलिब्रेट। और इसके अलावा भी अगर देखा जाए तो हम लोग क्या करते हैं, अगर लंबी छुट्टियां अगर आ गई तो हम नए नए प्लेसेस को विजिट करना पसंद करते हैं, एक्सप्लोर करना पसंद करते हैं, जिसके माध्यम से हम अपने नॉलेज को काफी एक्सपेंड कर पाएंगे या अपने हॉराइजन्स को ब्रॉडन कर पाएंगे और मस्मराइजिंग व्यूज को या सीनिक व्यूज को एंजॉय। यही बोलना है ना? Yes, sir. यस सर। आंसर क्या होगा? एक्चुअली आई लिव फार अवे फ्रॉम माई पेरेंट्स, so whenever I get an opportunity or whenever I get a holiday, normally I go back to them to have a get together and celebrate holiday. Sometimes I prefer to travel to new places to broaden my horizon and enjoy mesmerizing. Am I clear now? Hmm. Yes, sir. वही आइडियाज हैं, सबको एक साथ मिक्स किया गया और एक जगह प्रेजेंट किया गया। Clear? Yes, जैसे sir. मिस्टर स्मिथ, आपकी भी माँ आपके साथ अभी नहीं है, अलग Hmm. जगह पे रहती है, तो आपका भी ये आंसर काम कर जाएगा, Exactly, sir. ये भी काम कर जाएगा। अब जिनके पेरेंट्स साथ में है तो उनका जवाब क्या होगा? यूजुअली I'm ड्यूरिंग living with the baby. I love to pamper myself, so I spend half of the day sleeping, and then if I will have some more days to spend or to enjoy, certainly I will plan to travel to new places so that I can broaden my horizon and enjoy much more. Am I clear? Yes, Yes, sir. sir. ये तो हो जाए ना, पैम्पर Yes. माइसेल्फ मतलब अपने आप को प्यार से क्या कहते हैं, बहुत प्यार से अपने आप को रखना या अपने समय को व्यतीत करना, अपने आप पर काफी ध्यान देना, केयर करना, Yes. तो उसके लिए मैंने But, पैम्पर। hmm. ठीक है? Hmm. Yes, sir. तो ऐसे भी सेंटेंस मैंने कंफ्यूज कर दिया या आंसर्स क्लियर हैं? No, no, clear, sir. तो लास्ट में आपने क्या बोला है mesmerizing के बाद? व्यूज बोला, मस्मराइजिंग या ब्रेथ टेकिंग व्यूज पढ़ा है ना मैंने, मस्मराइजिंग वर्ड बहुत, Yes. Mhm. मस्मराइजिंग पढ़ाया होगा, ब्रेथ टेकिंग बताया होगा, नहीं स्टनिंग भी बोल Yes, sir. सकते। तो इस तरीके से हमारा आंसर कंप्लीट होगा। ओके, Yes, sir. now time is up, it's already 9:07, we will have to wrap up. Okay, Yes, and I sir. am wrapping up the session. We will meet tomorrow and discuss the rest of the questions. Okay, Sure, sir. Sure, sir. how was the session? It's too It good. was amazing, sir. I It is learned a very lot of things. true. We learned many things today. Grammar, sentence structures,